students, now I will told you about types of genetic engineering technique. Before starting my lecture, I please inform me that are you getting this in English or not. I can translate it in Hindi also if you want. Students, it is very easy English and I think that you should read it in English. Terminology will be more easier for you in English as far as biotechnology is concerned. Now, type of genetic engineering techniques. First technique is recombinant DNA technique. A recombinant DNA technology is a type of genetic engineering technology in which an artificial DNA molecule is constructed by ligating two different DNAs. दो डिफरेंट DNAs को जोड़कर एक आर्टिफिशियल DNA मॉलिक्यूल बनाया जाता है कुछ फिजिकल मेथड्स को यूज़ करके. For that, the gene of interest is inserted into the plasmic vector and used for gene transfer experiment. A vector which may be a bacteriophage or plasmid DNA in which the gene of interest मतलब जीन जो हमको जिसमें इंटरेस्ट है, मान लीजिए वो किसी प्लांट के लिए हीट टॉलरेंट जीन है कि उसको हीट रेजिस्टेंट बना देता है या और भी कोई बेनिफिशियल जीन है, तो उस जीन को हमने इंटरेस्ट का जीन है हमारा, तो उसको हमने लेके एक वेक्टर जो है वो व्हीकल की तरह जाएगा और जो हमारा टारगेट सेल है उस पर जुड़ जाएगा. तो उस व्हीकल में उसको लोड कर दिया, जैसे किसी व्हीकल में सवारी को लोड करते हैं उस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को लोड कर दिया और फिर वो टारगेट जीन में जाके अटैच्ड हो जाएगा. तो इस तरह से वो टारगेट जीन में जब एक्सप्रेस होगा तो वो मॉडिफाई होगा, उसका फिनोटाइप में एक्सप्रेस होगा वो, और वो मॉडिफाइड फिनोटाइप उस प्लांट स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म को जो बेनिफिट उसको नेचुरली उसके जीनोम में नहीं था वो वहाँ पे एक्सप्रेस होने लग जाएगा. दिस इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम और टारगेटिंग द जीनोम और expressing the beneficial genes by using physical methods or engineering methods is called genetic engineering. अब genetic engineering है और that देखिए this is not a easier process कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया हमने और फिर हमने उसको टारगेट पे पहुंचाने के लिए एक व्हीकल के थ्रू भेज दिया. इसके लिए बहुत सारे हमको टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा. पहले तो हम क्या होगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम जीनोम में से जहाँ से हमको लेना है उस जीनोम में से उसका सीक्वेंस कर जो है हमको डिटरमाइन करके उस सीक्वेंस को हम वहाँ पे रीड करके और फिर वहाँ से स्ट्रेचर्ड कट लगा के और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ से निकाल के और फिर प्लाज्मिड में देखिए प्लाज्मिड डीएनए जो है वो बहुत सिंपल प्रकार का डीएनए होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए होता है और वेरी सिंपल टाइप ऑफ डीएनए होता है. तो उसमें क्या होता है कि इस जो कट के लिए पॉइंट होते हैं वहाँ पे कट लगा के जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए कुछ ऐसे सीक्वेंस चाहिए होते हैं जिनके आगे या पीछे होने से ही जीन क्या होता है जीनोम में एक्सप्रेस होता है. तो वो सीक्वेंस डिटरमाइन करके ये जो प्लाज्मिड डीएनए है फेक डीएनए है जो है बैक्टीरियोफेगेज का जो डीएनए होता है बहुत सिंपल प्रकार का डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, वो किसी प्रकार से प्रोटेक्टेड नहीं होता. तो उसको ओपन करके उसमें उसको लोड करके और फिर जो टारगेट जीनोम है उसमें कट लगा के उसको उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है. डीएनए को हमने रिकम्बाइन कर दिया है, नेचुरल जो उसका सीक्वेंस था उससे हटके. अब जीन डिलीवरिंग टेक्निक इज एम्प्लॉयड बाय द इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट जीनोम. नाउ इलेक्ट्रोफोरेशन, सोलिसेशन एंड वायरल वेक्टर mediated gene
transfer, liposome mediated gene transfer, transposon mediated gene transfer, or some of the methods used for that. These terms you may not be heard them about earlier, or maybe you have read them, but in this biotechnology, if you want to learn the biotechnology properly, you should understand that term. What is virus? What is vector? What is liposome? Liposome. What is liposome? What is transposon? So this is all terminology for extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA, if you read about prokaryotic cell, you have already पढ़ चुके हैं आप फर्स्ट ईयर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, लिपोसोम क्या होते हैं, है ना। तो ये सब आप वहाँ पे वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जीन एडिटिंग, a gene editing technique is used in edit the genome in which an undesired DNA sequence is removed or new genes can be inserted into host genome. Some known gene editing tools in genetic experiments are CRISPR, Cas9, TALEN, and ZMN. Process of genetic engineering. Genetic engineering technique is used for many different purposes. Thus, we must have to decide first the purpose of the experiment. The entire process of genetic engineering can be divided into 5 broader steps: selecting and isolating the candidate gene, selection and construction of plasmid, gene transformation, insertion of DNA into host genome, conformation of insert. Selecting and isolating the candidate gene. The gene must contain a sequence of DNA that we want to study, and for that a gene has some special characters. A candidate gene should have high GC content and lower repetitive DNA sequences. In addition to this, the gene of interest must be too long. Only a few kb genes can be successfully inserted. Longer the gene, higher the chance of failure. The candidate gene must have a start and stop codon in it. You may refer for genetic codes for understanding this. Start AUG, UUU, some codons which are attached to the long chains of amino acids, and they initiates and stops the chain elongation of protein synthesis that you have already taught in first year. So you may revise it from your first year books. Now the gene of interest can be isolated from the rest of the DNA using restriction digestion. Means an enzyme that restriction digestion is just digest the DNA and break the chain of DNA for the removal of gene of interest. That is polymerase chain reaction से भी इसको कर सकते हैं. polymerase जो होते हैं एंजाइम होता है, और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है बैक्टीरियल एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, having the power of digest DNA sequence at a specific location. Using a specific type of restriction endonuclease, we can cut and isolated our gene of interest. The restriction digestion method is explained. I will explain you later in detail. In the polymerase chain reaction, using the information of gene sequence, the gene of interest or the candidate gene is amplified in thermocycler, which is we read in the technique PCR, that multiple copies of this gene of interest are formed artificially.
The machine using the polymerase chain reaction makes millions of copies of a gene of our interest through the process of agarose gel electrophoresis. The amplified gene is isolated. If the gene of interest is well studied previously, then the information of gene is accessible in the genetic library and we can use it for artificial synthesis of a gene of our interest. In, in the next step, perform DNA purification if required. Now our DNA is ready to insert in a plasmid. Now selection and construction of plasmid. Selecting plasmid for genetic engineering experiment is one of the crucial steps in the entire experiment. We must understand why the plasmid is used in the gene transfer experiment. The plasmid DNA is a circular double-stranded cytoplasmic DNA of bacteria that replicates independently. Scientists are using it as a vehicle for transferring the gene of interest to the largest location in the genome. It can efficiently transfer the gene at the target location. The structure of plasmid is explained in the figure below. Preparation of plasmid. Select the plasmid which suits your experiment. The plasmid must have the origin of replication, promoter region, antibiotic resistance gene, and other important sequences. Using the restriction digestion method, an insertion site is introduced in the plasmid at which our genes of interest is ligated. That is, plasmid DNA is cut at the insertion site and the gene of interest is ligated or jointed there. Utilizing the T4 DNA ligase, that is enzyme which power sealer, the DNA of our interest is inserted and ligated in the plasmid. Along with the plasmid, a selectable marker is also introduced in the plasmid DNA to identify the recombinant DNA. A marker DNA that is identify that this is recombinant DNA and the recombinant DNA is now loaded on vehicle and vehicle is transferred to the a promoter region and a termination sequence are also included in the plasmid which are very important for the expression of the gene. If the gene is not attached before after the promoter region, it will not express its product. Uh, so and terminated sequence are also included. Terminates the amino acid chain for the effective expression of gene of our interest. A plasmid with our gene of interest and some other important sequences is now referred to as recombinant DNA molecule. So, this chapter also explain you how a recombinant DNA molecule is formed. Now, our recombinant DNA molecule is ready for the expression. If we are performing gene cloning, then the plasmid is inserted into the bacterial host. For that, generally E. coli are commonly used. Once the bacteria start dividing, our recombinant plasmid DNA is also replicated along with it. Now we have the multiple copies of our plasmid DNA which we extracted using the plasmid DNA expression kit.